बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन वंस अगेन। और आज है जनाब हमारा लेसन नंबर 22। दैट मीन्स अ न्यू साउंड, a new story and new vocabulary words. So children can see some pictures and then they can start guessing. आप guess करें बच्चों, अंदाज़ा लगाएं, अपना कोई जो है अपना ख्याल हमें शेयर करें कि इन पिक्चर्स के साथ अगर आपको कभी स्टोरी बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप कैसी स्टोरी बनाएंगे और उसमें कौन कौन से लोग होंगे। सो टीचर्स, दिस विल ऑल्सो डेवलप देयर क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के लिए तो आगे इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में वर्किंग भी करनी है और फ्यूचर की स्टडीज़ को भी क्रिएटिविटी की बेस के ऊपर ही इम्प्रूव करना है। सो आज हमारा जो टास्क है, चूँकि डे 1 का टास्क होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग का। शाबाश बच्चों, तो गौर गौर से सुने, गौर गौर से देखें, गौर गौर से बोलें, लेकिन ध्यान आपने रखना है उन ख़ास चंद अल्फाज की शुरू की आवाज़ का जो कि इस तस्वीर के शुरू में आती है और आगे आने वाली तस्वीर में भी आएगी। तो चलिए बताइए ये क्या चीज़ है। ये है रंग बिरंगी मज़ेदार सब्जियां। अब मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी सब्जियां नहीं अच्छी लगती, लेकिन हम उनकी हेल्दी और अनहेल्दी होने पे जीके के लेसन में बात करेंगे। लेकिन हमें ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितनी भी नेमतें बनाई हैं, देखिए उनमें कितने सारे रंग हैं, कितने मुख्तलिफ जायके हैं, इसीलिए बनाई हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्दी फूड खा के स्ट्रांग रहे। लेकिन सब्जियां आज के लेसन में क्या करी हैं, तो इंग्लिश का लेसन है, तो इंग्लिश में सब्जियों को क्या कहते हैं? वेजिटेबल। शाबाश, वेजिटेबल। हाउ डू वी से इट? वेजिटेबल। और शुरू की साउंड है व, 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 vegetable. Okay, so let's see next. Oh, what is this man doing? He's playing a musical instrument. बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आते होंगे, टीवी पे नजर आते होंगे। हो सकता है आपके एरिया में भी लोग जब कोई फंक्शन खुशी का मौका होता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, जैसे दफ बजाते हैं, डफली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो ये भी जनाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यहाँ पे रख के ऐसे इस स्ट्रिंग के साथ बजाया जाता है और इसका नाम क्या है? वायोलिन। वायोलिन, व, वायोलिन। तो जनाब अभी हमने 2 वर्ड सीखे। एक सीखा व से वेजिटेबल और व से वायोलिन। सो लेट्स सी, इज देयर एनी अदर पिक्चर? ओह यस, गमला। ये क्या कलर है यहाँ पे? इट्स अ वॉज। व, वॉज। जी, इंग्लिश में इसको वॉज कहते हैं। दिस इज अ वॉज। नाउ व्हेन यू गो होम और घर जाके आप देखेंगे घर में कहीं पड़ा है, तो वहां जाके आपने ऐसे नहीं बताना वॉज, ये वॉज है। आपने कहना है दिस इज अ वॉज, दिस इज अ फ्लावर। शाबाश। व, वॉज, व, वैन। शाबाश। व से और क्या सीखा हमने? वैन भी तो आप बैठ के स्कूल आते हैं। व, वायलिन और व, वेजिटेबल्स। अब जरा सोच सोच के बताएं और कौन कौन से वर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं। सो टीचर्स, प्लीज पॉज द वीडियो। और मैंने इनके साथ वैन का वर्ड भी एक शेयर किया ताकि ये जल्दी से अपने जहन में इस साउंड के वर्ड्स को एक्टिवेट कर लें, क्योंकि रोजाना के बेसिस पे हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के इस्तेमाल करते हैं जिनके शुरू में व की साउंड आती है। सो प्लीज पॉज एंड एटलीस्ट रिवाइज दीज पिक्चर्स विच आर गिवन इन द प्रेजेंटेशन। ऑल राइट, गेटिंग बैक टू द टॉपिक। तो आज की जो साउंड है उसका फेस, यू नो व्हाट, इट्स वेरी इजी, यू कैन इवन मेक इट विद योर फिंगर्स। आपने कभी देखा है स्क्रीन पे गेम के बाद जब प्लेयर्स ऐसे कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? इट इज द साइन ऑफ व। और जब हम कोई गेम जीत जाते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं विक्ट्री। व, विक्ट्री। सो नाउ यू अंडरस्टैंड why they show you this V, because V से जो ये साउंड से V से वर्ड बनता है वो है victory, और victory का मतलब होता है जीतना। So next time when you complete your work on your book, just show this to your teacher. V, victory, मैंने काम कर लिया and I have win it. So teachers, V के face की recognition करवाएं and then let's see if they can find in the vocabulary picture. V, village. V, vegetable. V, violin. V, was, and V, valley. So now let's see what is the story and the sound for this.
So let's go back and see what was the story. Now let's read the story and see what is the verse sound here. The storyline says, Vicky was a village boy. His father was a farmer. They grew vegetables in the fields. Vicky was a student in a small school in the valley near river Neelam. His teacher, Mr. Wasim, was a very kind and humble person. All the children in the class loved him, and all the adults of the village trusted him. One day in the afternoon, Vicky's father gave him some vegetables in a basket for Mr. Wasim. When Vicky reached at the door of his house, Vicky was surprised to hear Mr. Wasim playing the national anthem of Pakistan on his violin. He stood near the door and started singing along with the tune. Mr. Wasim heard him and called him inside. Vicky had a lovely voice, and Mr. Wasim encouraged him to sing the national anthem on the school's results day. Vicky was very happy. He rushed home and told his parents and grandparents about what his teacher asked him for. They all were happy and proud of him. Mr. Wasim gave him a vase as a gift. So now the pictures in the story are about vase, violin, vegetables, and now children are going to identify it. So now once again, the victory sign, and you are going to find the face of the sound. See, village, vegetable, valley, vase, violin, कितने सारे वर्क के वर्ड्स हमने आज की स्टोरी में देख लिए. So teachers, आज की स्टोरी में जब आप लेटर को इनको recognize करवा दें, so the poem which is suggested here is very simple. Drive Vic's van round the village. Drive Vic's van round the village. Drive Vic's van round the village. And the sound is V, V, V. It's a soft sound V. And what is this? It's a picture of a V van. Awesome. So now there is a task now for group activity. और हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे सजेस्ट किया है टीचर्स कि आप कुछ स्ट्रिप्स काट के बच्चों को दे दें एंड देन दे कैन मेक देयर ओन वॉल्स. और अगर आप उनको कोई एक्टिविटी किसी और मटेरियल की दे रही हैं कि वो प्ले डो से वॉल्स बना लें या वो पेंट ब्रश से किसी पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लें, दैट इज़ टोटली अप टू यू. लेकिन आपने ग्रुप में उनसे आज के साउंड के फेस की एक एक्टिविटी करवानी है. सो कोशिश करें कि रोज़ इस एक्टिविटी का मटेरियल चेंज करें ताकि बच्चों को डिफरेंट मटेरियल्स के साथ भी अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने का मौका मिले. एंड देन प्ले ग्राउंड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू गो अराउंड एंड लुक एट थिंग्स. सो हो सकता है आपको प्ले ग्राउंड में कहीं पे कोई वेजिटेबल नज़र आ जाए या घर जाते हुए कोई शॉप नज़र आ जाए जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी होंगी और वो बच्चे जो वैन में जाते हैं वो अपनी वैन को देख के कहेंगे दिस इज़ माई वैन, दिस इज़ अ वेजिटेबल. ऑलराइट, सो प्लीज़ कंटिन्यू टीचर्स. आज आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चे जब घर जाके इस लेटर को ट्रेस करें तो वोकैबुलरी वर्ड्स को एक छोटे से सेंटेंस में बोलना भी सीखें ताकि उनका स्पीकिंग कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो. सो प्लीज़ कंटिन्यू. टेक केयर. अल्लाह.